Afternoon, Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to yet another episode of the Dental Talk and to our podcast series known as the ANDC podcast series. Today, we have another faculty member from Azra Nahi Dental College by the name of Dr. Usman Sana. Dr. Usman Sana completed his BDS from Mont in 2005 and completed his FCPS training in Operative Dentistry. He has held personal interest in microcontrollers and their coding in machine language, reading and understanding about actuators and micro machining. He has developed gadgets, developed and holds patents for gadgets related to dentistry like intraoral cameras and endomotors and a lot of that kind of stuff. He has served as the registrar at Sharif and CMS Lahore and served as the assistant professor at University of Lahore and is currently serving as the head of department at Azra Nahi Dental College. Thank you so much, sir, for taking time out. It means so much to me. आपने संडे को टाइम निकाला. How are you? Most welcomely. Thank you very much for providing me some opportunity to communicate through your platform. Alhamdulillah, I'm fine, enjoying. Thank you so much, sir. With your permission, should we start the interview? Sure, go ahead. All right, perfect, sir. सर सबसे पहला सवाल थोड़ा पीछे जाते हैं. टेल अस अ बिट हाँ. अबाउट योरसेल्फ. आप बीडीएस में कैसे आए? ठीक है, फिर डेंटिस्ट्री के वो 4 साल डिमॉट में कैसे गुजरे? आपने ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री क्यों चूज की एफसीपीएस के लिए? तो ज़रा सा जल्दी से उसको रिकैप करें अपनी अर्ली लाइफ इन डेंटिस्ट्री को. अच्छा, सबसे पहले तो आई एम वेयरिंग माय फिटनेस जैकेट इफ यू कैन सी इट. अच्छा. इसकी एसोसिएशन क्या है कि द डे आई गॉट माय एंट्रेंस ऑफ माय एंट्री इनटू द डेंटल कॉलेज, इट वाज हम्म. इन 2000 बेसिकली. तो ओके. मैंने उस दिन इस चीज का आई वाज जस्ट गिविंग द साइज फॉर दिस. ओह. So after probably after 23 years, I still fit to do this my jacket. I call it my fitness jacket. और दूसरा यही है कि it has been wonderful. मतलब 2000 से 2004 तक graduation डीमॉन्ट से house job, then first 10 में alhamdulillah getting through my FCPS part 1. Yes, it took a bit of longer time to get through my part 2, but I am very well aware of my personal drawbacks. I still believe that I'm not a very sharp student. I have never been a very photographic student और होता है ना जिनकी बहुत photographic memory होती है. जी. So knowing my own self, my inherent defects, so that has led me go a long way. Alhamdulillah ये रहा है सारा. तो बाकी नहीं, दैट्स एन अमेजिंग जर्नी. सर थोड़ा सा आगे चलते हैं. आपने ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री क्यों चीज चूज की एफसीपीएस के लिए? व्हाई स्पेसिफिकली ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री एंड नॉट एनी अदर फील्ड? अच्छा अच्छा उसमें my at that time I'm talking about 2004-5 when I was through my in my house job. हम्म. I just had that thing कि यार we have patients of commercial carcinoma, especially in surgery, हम्म. road traffic accidents. So one thing in my mind that where I at that time हम्म. when I opted for operative, I just did not wanted to opt for any procedure or thing where there was a potential of life loss. Just having the name associated, हम्म. मतलब होता है ना myths भी होती हैं. We have all sorts of patients in our profession कि उसने सर्जरी की और उसके बाद the patient was not able to survive. I understand professionally it might sound a bit odd, but just not having the association of somebody where you might be held मतलब responsible हम्म. of not being up to the mark. तो उस सिर्फ एक element के ऊपर ओके. कि ओके. किसी की डेथ वाला. हाँ, ऑन द अदर हैंड वी टॉक अबाउट द फ्लिप साइड, तो आप ही हैं जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ओरल सर्जन्स को सारा जाता है, क्रेडिट जाता है. या ब्रेस्ट या. सेल कार्सिनोमा और जिस तरह से आजकल इट्स एन अपकमिंग जाइंट ऑफ कैंसर एंड न्यूप्लेजिया एंड व्हाट नॉट. So they are serving on the forefront. But my point was not to हम्म. be associated with any of the person who is on his or her deathbed and मेक सेंस. willingly, दैट्स अ unwillingly या वेरी. उस चीज में. हाँ, तो that was my whole point. या. Otherwise, yes, one thing that I was aware of at that time also, that I had a bit of artistic thing. मतलब, if I look ओह. at ओके. my structure and thing, I या. have those artistic skills, a bit of art, what we call art and science.
Yeah. So that were the two, I think, two reasons of opting for operative. That's it. I'll leave Perfect, it like sir. that. Perfect. That's a very unique reason. Actually, I've never heard of this reason for choosing operative dentistry at my podcast previously. चलें सर, वो तो अच्छी बात है. हम फिर जरा आते हैं आपके गैजेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ. आपको ये Sure. शौक कैसे पैदा हुआ? आप लाइक हाउ डिड यू गेट इंटरेस्टेड इन दिस साइड ऑफ डेंटिस्ट्री? बिकॉज यहाँ पे बहुत कम अपॉर्चुनिटीज हैं इस तरह की इनोवेशन की या इस तरह के ख्यालात की. उसमें I'll take it back to 2008. ओके. I was in a workshop of Rotary Endodontics. Khalid Iqbal Mia, he was here from Pennsylvania, MSecon. So at that time, we were working on Rotary Endodontics. So being my profession, engaged in endodontic therapy, Rotary Endodontics, I just had that curiosity or query in mind, ke, हम्म. what's that low RPM and high torque? हम्म. And then I have this thing, मतलब छोटे होते से ही होता था कि अगर एक खिलौना मिलना, एक जहाज मिलना, कोई चीज आनी, तो तीसरे दिन ना वो थोड़ी पेचकस के साथ खुली होती थी. ठीक, तो that thing, that हम्म. habit or that attribute of my childhood, I हम्म. still carry today, and I don't hesitate opening up any of my gadget. So उससे क्या हुआ कि although very expensive gadgets we are dealing with, but हम्म. I still don't hesitate going into mechanics and all those stuff. और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात, मतलब which is part of my belief system, that um, जो रिस्क होता है ना बेसिकली, वो आपको आपकी औलाद के साथ और आपके टाइम के साथ बढ़ा होता है. हम्म. और यहाँ पे रिस्क का मतलब खाली फाइनेंशियल एसेट या कमोडिटी नहीं है. इट वाज आफ्टर माय सेकंड डॉटर when I just out of nowhere I started reading about robotics, actuators, and machining and some stuff like that. So ये दो चीजें इस तरह से थी. If I हम्म. correlate from my childhood, या. that habit or that inquisitiveness of seeing what's inside, how this is rotating, torque क्या है, RPM क्या होती है. हाँ. तो ये दोनों चीजें कंबाइन करके ना, एक I started getting interested into rotaries, actuators, micro फिर machining. आपने Then किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आपने काम किया है? किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रोबोटिक्स में अगर आपने काम किया है, उसका थोड़ा सा ब्रीफली बताएं कि किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ क्या इनोवेशन की है. एंड मतलब जनरली आपने ये फिर पेटेंट कैसे कराया इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पाकिस्तान? जो पहला मेरा रोटरी के साथ या रोबोटिक्स की तरफ जो एक फर्स्ट स्टेप था, दैट वाज एंडोमोटर. ओके. Right again from that 2008 workshop, it was a question in my mind ke, what's this high torque and low RPM. The second product was physio dispenser, because it works on the same philosophy or the phenomenon mechanism, that it has a high torque and low RPM, whatever the specification we are using, 200, 400, 100,000 RPM, 1,000 RPM at a 30 Newton meter, 40 Newton meter torque for implant placement. तो उसमें यही था कि फर्स्ट वाज एंडोमोटर. आई वेंट थ्रू अ होल प्रोसेस. In fact, in during my training I was involved in learning about how microcontrollers work. I went to some of one of my teachers, who was a teacher at Ravi Road, and he used to teach how microcontrollers work. So I literally spared about 2 hours a day. I went to his office for learning that. So I did all those steps and the functions of how 8051 microcontroller works. So I still know a bit about that. That has increased my understanding about microcontrollers. हम्म. Then when it comes to the hardware aspect, because that's a software aspect where we control the revolution per minute RPM and the torque. The second thing is the mechanical component. I happen to be a very good friend with a machinist, and he has provided all his skills and his workshop and the resources where testing the torque and all that stuff, playing with the RPM. That was, I think, a blessing, that and a network that helped me. That teacher who told me that how microcontrollers work, and then having a friend or it's more of a family friend now, that who will be who's helped me in that. वाह. The third thing after my FCPS was the end of microscope, surgical operating microscope.
that I developed in collaboration with IADSR Dr. Yaz. Hmm. And I claim now there are many senior and my teachers also and colleagues who are working on surgical optic microscope, but I claim that in 2016, yes, approximately it were about 10 microscopes installed at IADSR, and I conducted a micro-endodontic workshop with 9, 10 students at that time. Wow. Coming to the patent, I still have one patent in IPO, Intellectual Property Office, Karachi, and it's about robotic orthodontics, not being my in core field, but having that amount of understanding and comprehension about microcontrollers, robotics, ATMs, asynchronous transmission modules. This is Yeah. known as ATMs. Yeah. And again, having a bit of knowledge about intellectual property. I've been involved in Yeah. training at Azra Nahid multiple times about what is patent, how to secure your intellectual property, what are copyrights, trademarks, and stuff like that. So all these things over the time And sir, has that's helped me integrate robotics, dentistry, and intellectual property. दैट्स अमेजिंग सर सर इस इतना सारा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस आपका है टेक में आपको अब अगले 10 साल में टेक्नोलॉजी इन डेंटिस्ट्री कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है इज रोबोटिक्स इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको डेंटिस्ट्री में कौन सी टेक एक्साइट कर रही है विद इन द नेक्स्ट 10 years? Straightforward, it's robotic and artificial intelligence, no question about it. Because for the last 7 5 7 years, we were in the era of Internet of Things. Even all this organization and all that stuff, it was Internet of Things. I'm talking about more about IT, artificial intelligence, Hmm. convolutional neural networks, because from 2025 it's going to be the practical or the application of AI. Currently, AI is artificial intelligence is in its black box. Hmm. It's still evolving. It's still an infant, Developing. Yeah. but that is evolving. So I believe that it's one aspect is very encouraging, very supportive. That we'll be having automated things. We'll be having automation. Artificial intelligence is going to have a lot of impact in dentistry also, Yeah. and robotics will be an integral part. But again, flipping the coin and seeing the dark side of the thing, if you can very well imagine the amount of jobs we are having currently, and what if I paint a picture where I tell you that robots will be going with endodontics and implant placement and surgeries, what will be the fate of professionals? That's a very big question to ponder about. So everything it's that glitters is not gold. We need to flip or see in the flip side of that Yeah. thing. If we are getting advancement technology tech, then yes, that has a technological advancement price, R&D price in it, but it also has a threat and a potential danger of laying off people. Yeah. So That's it's true. not. I'll say we have to see both sides of the picture. That is true. It might be a threatening future for especially for the young graduates. दैट्स अ ब्रिलियंट आंसर सर सर अब थोड़ा सा आते हैं आजरा नाही डेंटल कॉलेज की तरफ यू नाउ यू सर्विंग एज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन ANDC मैंने आपको देखा है आप औरक में भी हैं औरक में भी हैं आप काउंसलिंग सेशंस भी करा रहे होते हैं फैकल्टी सेशंस भी करा फैकल्टी के लिए भी सेशंस करा रहे होते हैं स्टूडेंट्स के लिए भी सेशंस करा रहे होते हैं मैंने खुद बहुत सेशंस अटेंड किए आपके तो एक तो पहले लेट्स टॉक अबाउट हाउ योर एक्सपीरियंस हैज़ बिन इन कंडक्टिंग दीज लाइफ कोचिंग एंड काउंसलिंग सेशंस फॉर द स्टूडेंट्स एंड द फैकल्टी. Yes, I'm enjoying at Azra Nahi, no doubt, because माइक्रोस्कोप वाला जब मैंने बताया ना काम कर लिया हुआ था. I just managed the program, and I still did not knew what an entrepreneur is. But when I moved for the first time at ANDC Azra Nahi way back in 2016, there I was introduced to entrepreneurship, what is entrepreneur, having a background about little bit about patents, intellectual property. I was there serving as an entrepreneurial expert,
और वहाँ मेरा काम ये होता था कि जो उनके आईटी के, कंप्यूटर साइंस के, फार्माकोलॉजी, डीपीटी के जो प्रोजेक्ट्स होते थे, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, उनकी आइडिया वैलिडेशन करनी होती थी। और उसमें भी जो मैंने बताई, मेरी जो एक बैकग्राउंड है टेक की, डेंटिस्ट्री की, फार्माकोलॉजी की, बिट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो मुझे बड़ा हेल्प करती थी। और इनफैक्ट दैट एस्पेक्ट वेयर टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और ये ऑरिक वाली सारी चीजें ना, दे थिंग्स स्टार्ट मेकिंग वेरी गुड सेंस। Yeah. और उस चीज ने बड़ा हेल्प किया है मुझे। Yeah. और कमिंग बैक टू लाइफ कोचिंग, आई एम इन माय स्टूडियो, यू Yeah. कैन सी एट द बैक, दैट्स माय थीम वॉल। तो आई हैव माय ओन लाइफ कोचिंग कंपनी। और उसी पर्सपेक्टिव में, मतलब इट फॉर सम इट माइट सीम लाइक आई एम ओवरडूइंग, बट आई एम जस्ट अलाइंड विद माय, यू कैन से, लाइफ पर्पस, Yeah. with my professional path, where And I it's see evidence myself based, maybe. so no one can really argue with what you're doing because it's evidence based. Yeah. और उसके बाद फिर जौन सी ट्रेनिंग सेशन होती हैं, तो वो लाइन है, इट्स देयर फॉर माय स्टूडेंट्स, they are my students. They become, obviously, or automatically they become my life coaching clients. Hmm. Then when it comes to health and well-being of the faculty, maybe 6 7 sessions a year plan किए होते हैं, we conducted for our faculty, for their well-being, stress management, all that सर stuff. अभी So स्टूडेंट्स का वो, that makes it very enjoyable. यस सर बिल्कुल, अभी स्टूडेंट्स का वो एंटरप्रेन्योरशिप का एक पूरा कोर्स हुआ है जिसमें वो हर थर्सडे को जाते थे, वो कोर्स अटेंड करते थे। वो तो मेरा दिल कर रहा था वो कोर्स लेने का, बिकॉज इट वाज सच ए यूनिक, वो सच ए यूनिक कोर्स कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहे हैं, क्योंकि हम जैसे लोगों को अभी डेंटिस्ट को इतनी अर्ली एज में नहीं आती। सो दैट वाज अ प्रीटी, वो भी बड़ा अच्छा था। मैंने आपका एक लिया था कोर्स, आई फॉरगॉट, ऑन आई थिंक फिटनेस था, फिटनेस का, बिल्कुल सर। वेट यस, लॉस और फिटनेस पे होगा। वेट लॉस एंड फिटनेस का, वो भी बहुत अच्छा था। बट नहीं, आई एम स्टूडेंट्स का ये सीखना, स्टूडेंट्स को इतनी अर्ली एज पे ये चीज़ें ड्रिल करना उनके दिमाग में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू डूइंग एन अमेजिंग जॉब विद दिस। थैंक यू। सर आप ऑरिक में भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप रिसर्च में भी, जो भी अदर नाइन में जो भी रिसर्च करता है उसको एडवाइस लेने के लिए डॉक्टर उस्मान सना के पास भेज दिया जाता है। तो सर वो वाला एक्सपीरियंस, रिसर्च वाला एक्सपीरियंस, क्योंकि अजरा नाइद का बहुत रिसर्च फोकस, वो एक रिसर्च पे बहुत फोकस करते हैं, तो वो आपका उसको हेड करने का कैसा आपका जा रहा है एक्सपीरियंस, एंड वो उसमें कैसे Currently, yes, आप I'm आगे working बढ़ना चाहते हैं? हाँ जी, I am working as an advisor. हम्म। That's an add-on again. Um, that becomes enjoyable for me, मतलब because उसमें ये होता है ना कि आप रिसर्च इन्वायरमेंट में हैं, हम्म। आप ऐसे लोगों से नेटवर्क कर रहे हैं, especially within the organization, because I happen to be in meetings with the dean of allied health sciences, with dean of art and design. हम्म। Couple of months ago, dean of architecture called me up, and he was just taking consultation or consulting me. He had archaeological या 3D imaging के लिए कोई एक उनका project था, तो उसकी intellectual property या property protection के लिए मेरे से discuss कर रहे थे। या तो वो जो नेटवर्किंग है ना, देर इज नो प्राइस टू इट, मतलब दैट समथिंग लाइफ एक्सपीरियंस which I believe might maybe no the dentist is currently doing. या उससे थोड़ा इम्पैक्ट आता तो है आपकी, मे बी एट माई प्राइवेट प्रैक्टिस और एट प्रोफेशनल लाइफ, लेकिन दैट हैज बीन अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। या और उसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप के सिस्टम्स किस तरह ऑपरेट करते हैं, सोलोप्रेन्योरशिप क्या होती है, मतलब ये सारी चीजें जौन सी हैं वो मेरे लिए बहुत ज्यादा वाइड हो गई हैं। उसका शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो शायद ना इतना हो रहा हो, बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट आई कैन सी के being at a leadership position, leading my own life coaching company, maybe going across borders, coordinating with IT people, with artificial intelligence, उस aspect में मुझे ऑरिक ने बहुत help किया है। या And then what is research culture, how do we cultivate it, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स क्या होते हैं, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग। और उसके बाद ये है कि आपको जो डेंटिस्ट्री में चीजें नहीं सिखाई जा सकती, जिस तरह प्रपोजल किस तरह बनाना है, उसकी फाइनेंशियल्स किस तरह एब्सोल्युटली। करने हैं, उसका रिसर्च एस्पेक्ट किस तरह से होगा,
Yes. So, we can spend maybe a lot of time on it, but I'll just keep it short. It's good, Yes. it's challenging, and that are the two things that I enjoyed in. Perfect, sir. Sir, इसी अब because you are a head of department at a dental college and you're in the decision making processes of a dental college, आप क्या changes देखना चाहते हैं at an undergraduate level education में? Undergrad education आप क्या changes देखना चाहते हैं? क्योंकि हर बंदे का होता है कि वो जब टॉप पे जाएगा तो वो changes लाना चाहता है. आप क्या changes देखना चाहते हैं in the undergraduate education हम system? भी स्पेसिफिकली एजुकेशन की बात कर रहे हैं और ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। जी, जी. तो उसमें जी हम उसके अंदर तो ये है कि हम्म, नंबर वन, वी नीड टू एज अ टीचर आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट वन एलिमेंट कि आई नीड टू सेट अ बैरियर और अ ग्रेड और लाइन कि अंडर ग्रेड को क्या 10 15 20 चीजें जिसको प्रोग्राम लर्निंग ऑब्जेक्टिव या कोर्स लर्निंग आउटकम्स बोल रहे होते हैं वो हमने सेट करनी है और वही सिखानी है बेसिकली। हेयर आई डू नॉट मीन कि आप उसको एक्स्ट्रा ना सिखाएं, लेकिन जो करंट ग्रेजुएट है वो उन 4 5 चीज़ों में जिसमें रिस्टोरेशन आ जाती है, एंडोडोंटिक थेरेपी आ जाती है, सर्जिकल स्किल्स आ जाती हैं, हम्म, प्रोस्थेसिस आ जाता है, क्राउन, बिकॉज दैट्स द ब्रेड एंड बटर ऑफ डेंटिस्ट्री। तो वो चीज़ें तो आप बिल्कुल पेश अपने स्टूडेंट्स को या, सिखाएं, उनकी प्रैक्टिस करवाएं और उसको रिपीटेडली करवाएं ताकि उसका रिपीटेड एक्सपोजर हो। दूसरा, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं या जो जो ओवरबर्डन है चीजें, हम्म, वो ठीक है, आई डोंट से कि डोंट टीच देम बिकॉज टुमारो they will be following pursuing post graduation in their respective fields and they should have yes, that knowledge। absolutely, बट जो क्लिनिकल डेंटिस्ट्री जो एप्लीकेशन में आनी है ना चीज, उस पर फोकस करें। थोड़ी चीज़ों को एक खास टाइम में स्पैन ऑफ 1 ईयर जो भी yes, ट्रेनिंग टाइम है उसको अगर हम एक डिपार्टमेंट की हद तक लेके जाएं तो इट्स अबाउट 3 3.5 मंथ्स पर डिपार्टमेंट। उस yeah, टाइम में वो प्रैक्टिकल चीज़ें सिखा के स्टूडेंट को ट्रेन कर दें, उसकी कॉम्पिटेंसी स्टैब्लिश हो जाए, सो दैट वंस ही ग्रेजुएट्स yeah. उसको बेयर मिनिमल बेसिक चीज़ें तो आती हों। That's very और important. उसके बाद उसने इम्प्रूव करना है तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के इंटरनेशनल नेशनल डोर्स ओपन है, तो ही और शी कैन ऑलवेज एक्सपैंड ऑन दैट। सो That's a very वी nice आर concept. वी आर ट्राइंग टू पुट इन मोर ऑफ कंटेंट Hmm. विच इज मोर कंफ्यूजिंग फॉर द स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट्स के शूज में आके बात करूं। Hmm. और उनको फिर वो जो स्किल है ना, मतलब आई व्हाट माय टीचिंग एक्सपीरियंस हैज बीन और व्हाट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग फॉर क्वाइट लॉन्ग, मे बी नाउ 10 years approximately, Yeah. कि we are educating teaching 80% of the time and we are transferring skill coaching about maybe 20% knowledge, Yeah. whereas when you come into practical dentistry, you come into general dentistry private practice, it's about 80% of your skill that you need to be implementing, Yeah. and 20% of the knowledge it's still there, I don't say it's there, not there, and वहाँ पे बहुत सारे लोग I personally know कि they are still evolving, they are still improving their Yeah. skills even being general dentist, but that's a lifelong process। No, तो that's a ये very कुछ चीजें हैं जो हमें सोचनी चाहिए अपने स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के लिए। that's a very nice concept, sir. Sir, graduation के बाद post graduation आती है. आपने FCPS किया हुआ है, so you're in a better position to tell us what आप इस वक्त एक fresh graduate dentist को क्या advice देंगे कि वो private practice में जाए या FCPS training में जाए? जो Which जो of the करंट two? सिचुएशन, Yes. जी जी, जो करंट सिचुएशन है ना, उसमें आई वुड सजेस्ट के if your primary focus is to earn and it's to have a good life living for yourself for your family, after graduation start a private practice, Yeah. put all your energies efforts at practice. But if you think and if you have the support from your family and you are financially stable, तो डू गो फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे वो लोकल FCPS आ जाए, MDS प्रोग्राम्स आ जाए, वी हैव ऑल अपकमिंग प्रोग्राम, Mm. एंड ऑब्वियसली द वर्ल्ड इज ओपन फॉर इंटरनेशनल प्रोग्राम्स आल्सो। Yeah. लेकिन इस चीज पे बड़ी क्लियर हमें कोचिंग ट्रेनिंग करनी चाहिए और उसमें मेरा ख्याल है कि टीचर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है Absolutely, कि sir. स्टूडेंट को असेस करके उसको एक गाइड दे दे, इसको कोच कर दे कि यस यू आर, आई एम नॉट ट्राइंग टू लेबल एनीबडी और Yeah. नॉट ट्राइंग टू कंडेम और सप्रेस एनीबडी कि FCPS करो या ना करो, Mm. लेकिन एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एज अ कोच,
I do suggest people that if you are looking for a stable life, Yeah, a good financial life, so it's better to start FCPF, your private practice immediately in your house job or after house job. absolutely. Because अगर आप number game की बात करें, तो it's approximately 6 to 7 years if you go straight ahead in your FCPS track, right or wrong? Absolutely, sir. ऐसे ही ठीक, है. आप 6 साल की प्रायर प्रैक्टिस के बाद बड़े आराम से 500,000 1 मिलियन प्लस तक प्रैक्टिस पे चले जाते हैं टेक होम के Hmm. साथ। और अगर आज के टर्म देखें और आज के प्रोबेबिलिटी में देखें, तो आफ्टर एफ सी पी एस गेटिंग अ जॉब ऑफ रजिस्ट्रार और एस आर whose approximate salary is around 80,000 100,000 depending upon कि आप किस इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, क्या आपको ऑफर पैकेज क्या है। Absolutely, sir. No, तो ये कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं यस जो सर. नो, दी आपने बड़ा अभी प्रैक्टिकली सोच के। समझाया है. बहुत आपने अच्छा. इतना ओपनली कोई हाँ, बताता नहीं है. हाँ, तो मतलब देर आर पीपल हु माइट हैव इन बैक ऑफ द ब्रेन, अच्छा यार इसने खुद एफसीपीएस किया हुआ है, कि तू हमें मना कर रहा है कि उसको नहीं कंपटीशन में। मतलब आई हैव माय जेट स्ट्रेटजीज, आई नो वेयर आई एम गोइंग व्हेन आई एम गोइंग टू मे बी क्विट Hmm. और टू रिटायर फ्रॉम प्रोफेशन मे बी। उसको अक्सर लोग ले लेते हैं कि अच्छा यार इस स्टेज पे आके व्हाई आर टॉकिंग अबाउट लाइक दैट। लेकिन ये चीजें होनी चाहिए, ये हमें खुद भी प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपने स्टूडेंट्स को भी बतानी चाहिए, Yes, sir. No, very और ये important. बहुत इंपॉर्टेंट है। Important, definitely, sir. Sir, last, we'll wrap this up in a while. Second last question. If someone like me, not me, well, हाँ मैं मुझे भी एक ही साल हुआ है ग्रेजुएट हुए हुए. सर कोई भी फ्रेश ग्रेजुएट है, अभी अभी डेंटिस्ट्री करके हाउस जॉब खत्म हुई है, फाइनल ईयर खत्म हुआ है, उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए? एक यंग डेंटिस्ट का इस वक्त माइंडसेट क्या होना चाहिए कि उसने उसको किस तरह अपनी नेक्स्ट 5 years कैसे प्लान करने चाहिए? माइंडसेट एंड जस्ट जनरली द पर्सनल ऑफ अ यंग डेंटिस्ट. अच्छा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ जाएंगी, उसमें डेंटिस्ट्री से ज्यादा आई बिलीव कि लाइफ कोचिंग विल बी गिविंग, मतलब गिविंग एन आंसर इन द पर्सपेक्टिव ऑफ अ लाइफ कोच, Yeah. दैट विल बी मच बेटर अप्रोच। Absolutely. बिकॉज आई हैवंट हैव टीचर्स हु सजेस्टेड मी कि सेल्फ अवेयरनेस लेके आओ पहले, Yeah. अपनी एबिलिटीज को देखो, अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्सप्लोर करो, अपने फाइनेंशियल्स को देखो, अपने Yeah. प्रॉबेबल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। तो एज अ लाइफ कोच आई वुड सजेस्ट कि एक्सप्लोर योरसेल्फ फर्स्ट। Yeah. As a Absolutely. graduate, That's very you should, important. you know for yourself that yes, I am good at clinical skill. Hmm. You know for yourself that yes, I am good at academics. So Hmm. maybe being good at academics is an indicator that you pursue an MS leading to MPhil MS leading to a PhD program. ठीक? And then pursuing a dental job as a career as a teacher or as a researcher, तो ये भी एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। दूसरा, इफ यू नो यू आर गुड एट क्लिनिकल साइड, Yeah. आपकी रेस्टोरेटिव स्किल, आपकी सर्जिकल स्किल, आपकी ऑर्थोडोंटिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, Yeah. तो go ahead with your clinical degree, be it an FCPS program or an MDS program, or go abroad. मतलब I have some of my colleagues who have done their M.Endos, M.Clindents, and they are brilliant colleagues now, alhamdulillah, जिनसे मैं भी आजकल सीख रहा होता हूँ बहुत ज़्यादा। Yeah. तो बेसिक थिंग इज करियर डेवलपमेंट, और उसमें सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एबिलिटीज, स्ट्रेंथ्स, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आई बिलीव के अगर डेंटिस्ट कम्युनिटी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आर कोर वैल्यूज, आर मॉरल्स, इनका बहुत बड़ा रोल है, एंड द फाउंडेशन स्टोन इज आर बिलीफ सिस्टम। Yeah. अगर ये चीजें आपकी ठीक है ना, Yeah. तो आप you won't have any regret whatsoever you are doing, because ये सारी चीजें एंड ऑफ द डे आपको इतना कंटेंटेड और इतना ग्रेटिट्यूड सिखा देती हैं Hmm. कि whatever path you pursue, as in it's your own decision, आपने खुद डिसीजन लेके ऑप्ट किया होता है कि yes, I'm a person with academic potential, I am pursuing my MS MPhil leading to a PhD program, postdoc, whatever. And if you know I'm a clinical person pursuing your private practice or a clinical degree like FCPS or MClindent or whatever, so that are some important things that a fresh graduate has to be in his or her mind before opting and going ahead.
Perfect, sir. Brilliant. Sir, last question. What do you think about this startup of ours? और इसमें कोई अगर आप हमें suggestions देना चाहें तो more than welcome. नहीं, इट्स अ वेरी यूनिक स्टार्टअप, इट्स अ गुड वन। Thank you. इसमें बहुत अच्छी लैटरल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की जा सकती है। वी कैन डिस्कस ओवर हियर आल्सो, कॉन्सेप्ट ऑफ गेमिफिकेशन आ रहा है आजकल, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इन इन योर The इन concept दिस of पर्सपेक्टिव, गेमिफिकेशन। अच्छा gamification. Okay, okay. Yeah, yeah, yeah. गेमिफिकेशन, यस, गेमिफिकेशन, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसको बड़े अच्छे तरीके से आप नेटवर्किंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं। उस तो उसके वो पे तो उसके ऊपर पे पूरा थॉट प्रोसेस देना पड़ेगा, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें थिंकिंग बेस्ड आ जाती हैं कि हमारा प्रोफेशन किस तरह जा रहा है, हम्म, इसमें कौन कौन सी अपकमिंग फील्ड्स आ रही हैं, कौन सी जो फील्ड्स विच आर, आई डोंट से कि वो ऑब्सोलीट हो रही हैं, बट दे आर ऑन द डिक्लाइन। yes sir. ठीक। तो जो राइज पे हैं फील्ड्स, इम्प्लांट इज वन ऑफ इट, रोबोटिक्स इज वन ऑफ इट। तो हमारे हमें इसको इस तरह और से आपको इनकॉर्पोरेटेड obsolete भी कौन लेके सी चल। लगती है कि obsolete हो रही हैं? ऑब्सोलीट में कुछ चीजें, अब इस तरह के हाँ कुछ जी, कुछ फीचर्स चीजें ही हैं, होंगी, ऑब्वियसली फील्ड तो कुछ पूरी चीजें हैं। obsolete नहीं होती। बाकी हाँ हाँ ठीक है, उसमें अब ऑब्सोलीट से मतलब ये है कि अगर हम फ्यूचर रोबोटिक्स का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देख रहे हैं, तो मे बी हमारे आईएसओ इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ से हैं एंडोडोंटिक्स की, वो ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। ठीक Yeah, है। makes sense. अब हार्डली कुछ लोग शायद करते हों भी गोल्ड स्टैंडर्ड के लिए और स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, बट आई बिलीव 90 80 90% रोटरी एंडोडोंटिक्स, चाहे वो रोटर्स पे कर रहे हैं चाहे वो मैनुअल कर रहे हैं, मैनुअल उसको कर रहे परसू हैं। कर रहे हैं। Yeah, तो ये एक लाइफ साइकिल होता है हर फील्ड का, हर yeah. इंडस्ट्री का। तो हमारी इंडस्ट्री में जिसमें डेंटिस्ट्री आती है, इसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो ऑन द राइज हैं, लाइक अलाइनर्स आर ऑन द राइज। Liners, अब absolutely. रोबोटिक्स अलाइनर के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे तो क्या होगा, that it can be a potential threat for the orthodontist, because वो already insecure हैं because of aligners, and there again is a imbalance between professionals and postgraduates or specialists। तो ये चीजें हैं। बाकी आपके स्टार्टअप, इट्स गुड, इट्स bringing a lot of experienced people on board, उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना, और उसके बाद उनका जो नॉलेज विजडम है वो यंगस्टर्स तक पहुंचे, उससे वो अपनी Thank you so much, sir. करियर डेवलपमेंट पे, ग्रोथ पे कर सके, ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। Yes, sir. और मच मोर कैन बी डन, मतलब नहीं सर, आप अपने डेफिनेटली। कर सकते हैं, मतलब मच मच मोर कैन बी डन, इट्स अ वेरी गुड थिंग ऑन द होल। Thank you so much, sir. Thank you so much for taking time out थैंक on यू। a Sunday for this. It really meant a lot to me. And see you tomorrow, inshallah, Monday फॉर श्योर, morning. लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है, ठीक Thank you so much, sir. है।